भाद्रवा माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह त्योहार श्री गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों और मंदिरों में गणेश भगवान की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। भगवान गणेश की पूजा में लाल चंदन, कपूर, नारियल, गुड़ और उनका प्रिय मोदक होता है। लोग किसी शुभ काम को शुरू करने से पहले संकल्प करते हैं और श्री गणेश जी को याद करते हैं। कुछ लोग शुभ आरंभ करते समय सर्वप्रथम गणेशाय नमः लिखते हैं। इसके अलावा यह रिवाज भी है कि सभी देवी देवताओं से पहले श्री गणेश जी को पूजा जाता है। इस रिवाज के बारे में तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों जाती है। तो आज हम बताने वाले हैं कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। दरअसल किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान एवं कार्यों में कोई विघ्न बाधा न आए, इसलिए सर्वप्रथम गणेश पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। मैं आपको एक श्लोक बताना चाहता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिव महापुराण की कथा के अनुसार जब भगवान शिव और गणेश जी के बीच युद्ध हुआ और गणेश जी का सिर कट गया, तो देवी पार्वती के कहने पर शिव जी ने गणेश जी के शरीर पर हाथी का सिर जोड़ दिया। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि इस रूप में मेरे पुत्र की पूजा कौन करेगा, तब शिव जी ने वरदान दिया कि हर पूजा और हर मांगलिक काम करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। इसके बिना हर पूजा और काम अधूरा माना जाएगा। मैं सानिध्य आपको एक और कथा सुनाता हूँ। एक बार समस्त देवताओं में इस बात पर विवाद उत्पन्न हुआ कि धरती पर किस देवता की पूजा समस्त देवगणों से पहले हो। सभी देवता स्वयं को ही श्रेष्ठ बताने लगे। तब नारद जी ने इस स्थिति को देखते हुए सभी देवगणों को भगवान शिव की शरण में जाने व उनसे इस प्रश्न का उत्तर मांगने की सलाह दी। जब सभी देवता भगवान शिव के समीप पहुंचे तो उनके मध्य इस झगड़े को देखते हुए भगवान शिव ने इसे सुलझाने की एक योजना सोची। उन्होंने प्रतियोगिता आयोजित की। सभी देवगणों को कहा गया कि वे सभी अपने अपने वाहनों पर बैठकर इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाएं और चक्कर लगाकर वो वापस आए। इस प्रतियोगिता में जो भी सर्वप्रथम ब्रह्मांड की परिक्रमा कर उनके पास पहुंचेगा, वही सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणेश जी भी इसी प्रतियोगिता का हिस्सा थे, लेकिन गणेश जी बाकी देवताओं की तरह ब्रह्मांड के चक्कर लगाने की जगह अपने माता पिता शिव पार्वती के साथ परिक्रमा पूर्ण कर उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब समस्त देवता अपनी अपनी परिक्रमा करके लौटे, तब भगवान शिव ने श्री गणेश को प्रतियोगिता का विजयी घोषित कर दिया। सभी देवता यह निर्णय सुनकर अचंभित हो गए और शिव भगवान से इसका कारण पूछने लगे। तब शिव जी ने उन्हें बताया कि माता पिता को समस्त ब्रह्मांड एवं समस्त लोक में सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जो देवताओं व समस्त सृष्टि से भी ऊंचा माना गया है। तब सभी देवता भगवान शिव के इस निर्णय से सहमत हुए। तभी से गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य माना जाने लगा। गणेश जी का पूजन सभी दुखों को दूर करने वाला एवं खुशहाली लाने वाला है। अतः सभी भक्तों को पूरी श्रद्धा व आस्था से गणेश जी का पूजन हर शुभ कार्य से पूर्व करना चाहिए। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि
गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि वातापि गणपतिं भजे ॐ वातापि गणपतिं भजे ॐ वातापि गणपतिं भजे ॐ वारणास्यं वरप्रदं श्री वारणास्यं वरप्रदं श्री वातापि गणपतिं भजे ఏనుగు తల ఉన్న దేవుడు వినాయకుడు. ప్రతి హిందూ భక్తుడికి ఇష్టమైన దేవుడు. ఏ పూజ అయినా మొదట ఆయనకే ప్రార్థన చేయనిదే మొదలవ్వదు. ఆయన శరీరం మొత్తం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దాని గురించి సూచిస్తుంది. తెలుసుకోవడం ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తుంది. భక్తులు ఆ రకంగా జీవించాలని తెలియజేస్తుంది. చిన్న కళ్ళు గణేశుడి చిన్న కళ్ళు శ్రద్ధ ఏకాగ్రత చాలా ముఖ్యమని చూపిస్తున్నాయి. ఏ విషయంలో అయినా లోతుగా చూడడం అవసరం. చిన్న నోరు వినాయకుడి బొమ్మలో పెద్ద చెవులు చిన్న నోరు ఉంటాయి. ఇది మనకి ఎక్కువ వినాలి తక్కువ మాట్లాడాలని నేర్పిస్తుంది. పెద్ద పొట్ట వినాయకుడికి పెద్ద పొట్ట వలన ఆయనకి లంబోదరుడు అని పేరు వచ్చింది. పెద్ద పొట్ట జ్ఞాన నిలయం అని సూచిస్తుంది. వినాయకుడికి ఒకే దంతం అని ఉంటుంది. ఏకదంతాయ అంటే విశ్వంలో శక్తి ప్రకృతిలో ఏకతత్వం యొక్క సత్యానికి అర్థం. తొండం నేర్పతనానికి సర్దుకుపోవడం ని సూచిస్తుంది. నుదిటిపై త్రిశూలం వినాయకుడి నుదిటిపై త్రిశూలం ఆయన తండ్రి పరమశివుని ఆయుధం. ఇది వినాయకుడి కాలానికి గత ప్రస్తుత భవిష్యత్తులకి కూడా అధిపతిగా తెలియజేస్తుంది. అందరికీ మరొకసారి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు. The holy festival of Ganesh Chaturthi is celebrated every year with great fervor in the country, with thousands of devotees thronging temples and Ganeshotsav pandals to offer their prayers. With the festival of Ganesh Chaturthi just around the corner, here are some ideas to make the celebration eco-friendly while maintaining the health and safety guidelines amid the coronavirus pandemic. Generally, Ganesh Murtis made of plaster of Paris are immersed in water, which harms the water bodies. Hence, there is a need to make Ganesh Chaturthi more eco-friendly. Numerous campaigns are being performed to create awareness on conserving the environment through different mediums. Idols made with plaster of Paris are non-biodegradable and will contaminate water by killing the sea-going lives in it and expanding the corrosive substances in water. Whereas eco-friendly idols are biodegradable and won't hurt the living creatures in water. One of the main aspects of why we should use eco-friendly Ganesha idols is that by dirty and unclean water, people will get infected by the dangerous elements. By worshipping the eco-friendly Ganesha idols with natural soil, we can solve this problem. And we can solve the problem of food poisoning. There are numerous sparkles and metals used to make Ganesh Murtis that are harmful to the body when it interacts with it. This can cause allergy and other health problems due to the presence of chemicals. While eco-friendly Ganesh idols are not made with any such sparkles. If you want a Ganesh idol made up of plaster of Paris, you must rely upon the sculptor. In the case of eco-friendly Ganesh idol, you can make one yourself with the help of your family members.
By this, it spreads satisfaction and congruity upon your family members and individuals. Family bond is a significant factor of bringing an eco-friendly Ganesh idol your home. Eco-friendly Murti can be made with things that are effectively accessible at home. With the increase in the number of people who support or love the environment, eco-friendly Ganesh idols are easily available in the market as well. Along these lines, have a favored eco-friendly Ganesh Chaturthi by bringing eco-friendly Ganesh idols and conserving nature with going green every Ganesh Chaturthi. Thank you and wish you all a happy Ganesh Chaturthi.